Hello everyone, how are you all doing? I'm Sarah with Learn Urdu with Sarah. So today I'm going to teach you conjugation of karna into 6 to 7 different tenses. I made several videos on it and I'll link them in the description box. The first one is the past simple tense. The verb that we are going to use, let's say, is call karna. Call karna. So if you're saying I called, it will be मैंने call की. मैंने call की. I called. मैंने call की. Present perfect is मैंने call की है. I have called you. मैंने तुमको call की है. मैंने तुमको call की है. I have called you. तुमको here is you. The past perfect tense will be मैंने तुमको कॉल की थी. मैंने तुमको कॉल की थी. I had called you. मैंने तुमको कॉल की थी. So remember, call is an English word, but it is feminine noun in Urdu. So therefore, we are saying ki in the end. Now let's conjugate it in the past habitual tense, something that you used to do. मैं उसको कॉल करती थी. मैं उसको कॉल करती थी. I used to call her. This is a female saying. मैं उसको कॉल करता था. I used to call her or him. मैं उसको कॉल करता था. This is someone who is a man. A man is speaking. मैं उसको कॉल करता था. मैं तुमको कॉल कर रही थी. मैं तुमको कॉल कर रही थी. I was calling you. मैं तुमको कॉल कर रही थी. A man would say मैं तुमको कॉल कर रहा था. मैं कॉल करती हूँ. मैं कॉल करती हूँ और मैं कॉल करता हूँ is a present simple tense. मैं कॉल करती हूँ. मैं कॉल कर रही हूँ. मैं कॉल कर रही हूँ. I am calling. मैं कॉल कर रही हूँ. I'm calling. मैं कॉल कर रहा हूँ. I am calling. A man is saying that. मैं कॉल कर रहा हूँ. The A sound is for man. The E sound is for female. Then the future tense will be मैं कॉल करूँगा. मैं कॉल करूँगा. I will call. मैं तुमको कॉल करूँगा. I will call you. मैं तुमको कॉल करूँगा. A female will say मैं तुमको कॉल करूँगी. मैं तुमको कॉल करूँगी. If this video sounds rushed because it's short, you can watch the longer form here. Have a nice day. Goodbye.